viewers, welcome to Sadha's YouTube channel NK Vision 1971 में. Today we are going to restart our partial speech classes. आज I hope you might have remembered before our journey of tense we have started our partial speech class and already completed noun. No, and I had given a little description on pronoun, and from today onwards we are going to restart our parts of speech, and the today's topic it is pronoun. After noun it is pronoun. What is pronoun? Pronoun that is used in the place of a noun. No, the substitute of a noun it is pronoun. So why do we use a pronoun in our sentence? Because you see, it is the parts of speech that replace a noun that repeatedly used in the sentence and make a sentence more irritating. No, so pronoun replace a repeated usage of noun in the sentence and make a sentence more precise and meaningful, right? And these pronoun are of how many kinds? You see, pronoun are of 7 kinds. In this class, I shall discuss about 7 kinds of pronoun, right? First, personal pronoun. Personal pronoun in this category, personal pronoun is subjective and objective. What is subjective personal pronoun? He, she, you, they, I, we. Suppose this sentence, I shall tell you, Subodh is a good boy. Subodh is an honest student. Subodh's mother is my friend. Subodh is very hardworking. So what you feel from this description? A particular word is being repeated in all the sentences. Doesn't it irritating? If we replace another word in this place, means in the place of Subodh. Suppose Subodh is a good boy. He is very honest. His mother is my friend. He is a hardworking boy. Doesn't it seems good? So this is the pronoun in the sentence, means the word that replaces a noun, that the word that replaces a subject or object in the sentence, that is nothing but pronoun. And let us learn about pronoun now. And first, in personal pronoun category, subjective pronoun, as I told you just a while before, third person singular number, he, she. Then second person it is you, both second person singular and plural it is you, and next comes first person singular number I myself, and in plural one we. And if we discuss the objective form of personal pronoun, it is he against him, she, her, you remain as the same, and they, them. In the place of I, it is used me, and in the place of we, it is us. Let us convert this word, use these words into sentences. Suppose Subodh is a good boy. He is an honest boy. He is an honest boy in the subjective form. I know him. So here he convert into him. Who is the object? Him. I know. I know who? I know Subodh. I know in the place of Subodh, I know him. Then suppose if our subject is a girl. Neha is a good girl. Neha is a good girl.
I know her very well. So who is the object in the sentence? Her. No. And you. You are a teacher in subject form. And I know you since 5 years. I know you since 5 years. Here you does as in the object form. No. Unlike this, I am a teacher. I am a teacher. So I here is the subject form. Teaching is my profession. Teaching is my profession. Here my is in the object form. So it is all about the personal pronoun. बोथ हमने क्या जाना? ही जब हम सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? हिम. वो एक अच्छा लड़का है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूं. वो एक टीचर है, मेरा उसके साथ कई दिनों से मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूं. नेक्स्ट कम पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? ये पॉजेसिव क्या होता है? पॉजेसिव यानी जिस पर हमारा अधिकार होता है, जो हमसे अधिकृत होता है. ये पेन मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, इस पर मेरा राइट है. तो इस सेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको कैसे यूज करते हैं. दिस इज हिज पेन. फर्स्ट पर सब्जेक्टिव केस में हिज, हर, देयर, योर, माई, आवर. एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिज वही सेम रहेगा हिज, लेकिन हर कन्वर्ट हो जाएगा हर्स में. देयर कन्वर्ट हो जाएगा देयर्स. योर योर्स. माई माइन. आवर आवर्स. राइट. नेक्स्ट कैटेगरी में क्या आता है? पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव यानी जिस चीज को हम पॉजेस करते हैं, यानी जिस चीज पर हमारा अधिकार होता है, जो हमारे अधिकार में होता है. जैसे कि ये किताब मेरी है. दिस बुक इज माइन. ये किताब उसकी है, उस लड़के की है. दिस बुक, दिस इज हिज बुक. दिस इज हिज बुक. हियर हिज इज द सब्जेक्ट. आप द सब्जेक्ट. दिस इज हर डॉल. ये खिलौना, ये जो डॉल है, ये उसकी है, इस लड़के की है. दिस गेंद, दिस बॉल इज, this is their ball. This ball is theirs. Sorry, this is their ball. सब्जेक्ट केस में ये जो गेंद है, ये उनका गेंद है. This is their ball. This is your book. This is my pen. This is our house. You know, पॉजेसिव केस में सब्जेक्ट, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव केस में जब हम सब्जेक्ट केस में सब्जेक्ट को लेते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन को एज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ये रहेगा हिज, हर, देयर, योर, माई एंड आवर. अगर हम इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें, ये बुक मेरी है. यहां पर सब्जेक्ट कौन है? बुक. ये बुक मेरी है. दिस बुक इज, मेरी की जगह माई यहां कन्वर्ट हो जाएगा माइन. दिस बुक इज माइन. अगर मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आऊं, ये उसकी किताब है. यहां पर क्या लिखा था? दिस इज हिज बुक. दिस बुक इज हिज. ये जैसे कि क्या ही से आता है, तो ये सेम रहेगा. ये हिज सब्जेक्टिव फॉर्म में भी रहेगा,
हिज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी रहेगा, लेकिन यहां पर चेंज हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर में। सपोज ये किताब उसकी है, ये उसकी किताब है। ये किताब उसकी है, अगर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज करें, ये किताब उसकी है, उसकी यानी यहाँ ऑब्जेक्ट है, वो उस बोलर की ऑब्जेक्ट है। दिस बुक इज हर्स। ये सारे जो किताबें हैं ये उनके हैं। दिस बुक्स आर देयर्स। ये सारे जो बुक है ये हमारे हैं। दिस बुक्स आर आवर्स। अगर मैं अपनी बात करूं, ये बुक मेरी है, दिस बुक इज माइन। ये रहा पॉजिटिव केस में। अगर हम रिफ्लेक्सिव, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कैटेगरी में क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी himself, herself, yourself, ourselves, myself, yourselves, right? ये क्या, सेल्फ यानी खुद, जो सब्जेक्ट के साथ ये जो आता है सेल्फ, जो काम सब्जेक्ट खुद करता है सेंटेंस में। आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ। मैंने ये काम खुद किया है, यानी द प्रोनाउन इज बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में प्रोनाउन क्या, खुद सब्जेक्ट पर आता है। I have done this work myself. You have done this work yourself. He has done this work himself. ठीक है। नेक्स्ट कम टू नो indefinite pronoun. Indefinite pronoun में कोई पर्टिकुलरली हम किसी को मीन नहीं करते। आज क्लास में सारे बच्चे absent है। Today all are absent in the class. मैंने किसी 1 2 3 4 राम दाम साम इनके नाम नहीं लिए, मैंने सारे बहुत क्लास को मैंने मीन कर दिए, तो एक ही वर्ड में पूरा क्लास आ गया। All are absent in the class today. मैंने क्लास के सारे बच्चों को जानती हूँ, मैं नेहा को जानती हूँ, मैं रवि को जानती हूँ, मैं शाम को जानती हूँ, मैं गोपाल को जानती हूँ। ऐसा ना कहकर मैंने क्या किया, अपने सेंटेंस में यूज किया, I know each of the students in my class, right? ऐसे everyone, सारे बच्चों में, सारे बच्चों को ये जवाब आता है। Everyone can answer this question, right? Many, और एक वर्ड है many, इसको भी हम indefinite pronoun की तरह यूज करते हैं। Many people are gathered in the meeting. सभागार में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। There are many people gathered in the meeting. तो ये रहे हमारे 4 pronoun in today's video class, and we shall discuss about the other categories in our next class. And if you like this class, as a memento of your love, give a thumb impression, share my class, share this video as much as you can, give your valuable comments so that I can give you more and effective lessons, contents, and also I can rectify myself if somewhere I may mistaken, somewhere I may wrong. So whatever negative and positive, I must await your comments, and subscribe my channel so that from a very tiny plant it can grow into a huge tree. And love you all. Thank you for watching, and bye bye, and we shall meet on this platform in the next class, most probably tomorrow. Thank you.